Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको UPSC and other civil service examinations related current affairs और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 10th अक्टूबर 2020। शुरू करते हैं। पीयूष गोयल gets additional charge of Ministry of Consumer Affairs. The Union Minister Piyush Goyal has been assigned the additional charge of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution in addition to his existing portfolios following the death of Union Minister Ram Vilas Paswan. राम विलास पासवान के मृत्यु के बाद उनका जो पद था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो मिनिस्ट्री का पद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को सौंपा गया है। पीयूष गोयल is currently serving as the Union Minister of Railways and Minister of Commerce and Industry. Number 2. DRDO successfully flight tests indigenously developed anti-radiation missile Rudram. The DRDO successfully flight tested a new generation anti-radiation missile Rudram 1 on October 9th at the Wheeler Island off the coast of Odisha. The missile was launched from Su-30 Mk-1 fighter aircraft. DRDO को full form है Defense Research and Development Organization. Number 3. RBI keeps key interest rates unchanged, projects GDP to shrink by 9.5% in financial year 2021. The Reserve Bank of India, in its Monetary Policy Committee meeting on October 9th, has decided to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility unchanged at 4%. Reverse repo rate remains unchanged at 3.35%. Decided to maintain its accommodative stance, the MPC has projected the Indian economy to contract 9.5% in the current fiscal year 2020-21. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट पॉलिसी जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में है वो अनचेंज रखा है 4% पे और रिवर्स रेपो रेट को भी वो अनचेंज रखे 3.35% में। Fourth, strict measures in place to reduce pollution as AQI remains poor. The air quality of Delhi continued to be in the poor category on Friday and is expected to improve in moderate category on Sunday, according to SAFAR System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, a government-run monitoring agency. SAFAR ने कहा है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी फ्राइडे में बहुत ही पुअर कैटेगरी में था, लेकिन वो लोग आशा रख रहे हैं कि संडे में वो क्वालिटी मॉडरेट की तरफ जाएगी। Number 5. Russia successfully test fires Zircon hypersonic missile. Russia successfully tested a new hypersonic anti-ship cruise missile Zircon on 7th October 2020 from the Admiral Gorshkov frigate in the White Sea in the Russian Arctic. It was the first time that a missile had successfully hit its target at the sea. Number 6. Indian Bank's Business Mentoring Program NSME Prerna inaugurated by FM Finance Minister Nirmala Sitharaman. Public sector lender bank Indian Bank has launched MSME Prerna, an online business mentoring program for MSMEs. It is the first of its kind initiative of any bank in the country for the MSME sector. Number 7. Axis Bank collaborates with Vistara to launch a co-branded Forex card. Private lender Axis Bank has partnered with Vistara, India's finest full-service airline, to launch a co-branded Forex card, Axis Bank Club Vistara Forex card, to cater to the needs of international travelers. International travelers के लिए Axis Bank और Vistara जो कि इंडिया के फुल सर्विस एयरलाइन कंपनी है, ये दोनों ने कोलैबोरेशन करके एक को-ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड बनाया है, एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो इंटरनेशनल से आते हैं उन लोग के लिए या कोई इंटरनेशनल जाता है उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी उन लोगों को हेल्प करने के लिए। द पार्टनरशिप इज फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन बाय अ बैंक एंड एन इंडियन एयरलाइन फॉर द को-ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड. Number 8.
Nobel Prize in Peace 2020 announced. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme (WFP). The World Food Programme is the world's largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security. WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हंगर को एड्रेस करती है. कौन से देश में कितने परसेंट इंसान हंग्री रहते हैं जिसे खाना नहीं मिलता है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं और वो लोग फूड सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं. Number 9. Armenian and Azerbaijan talks begin in Moscow. Armenia and Azerbaijan held their first high-level talks on Friday after nearly 2 weeks of fierce clashes over the disputed Nagorno-Karabakh region, with hopes rising that the ceasefire could be brokered in Moscow. Armenia और अजरबैजान मॉस्को में अपना फर्स्ट हाई टॉक रख रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग रख रहे हैं आफ्टर 2 weeks ऑफ फाइटिंग जो कि नागोर्नो करबख रीजन को लेके हुआ था. तो अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव who has reportedly vowed to use his military to retake the breakaway province said the talks represented a historic opportunity for Armenia. अजरबैजानी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये आर्मेनिया के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि वो उनका प्रोविंस उनको दे दे ताकि उनको मिलिट्री यूज ना करना पड़े उसे लेने के लिए. एंड नंबर 10 is as always important days और 10 अक्टूबर का important day था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.